Hi, in this video we will now talk about discrete goods. You see, the good and the bad is कि discrete goods का हमारे पास utility function नहीं बनता है, क्योंकि utility function के लिए हमें उसके अंदर limit लगानी पड़ेगी ना, that it will only be whole numbers. तो अभी आपके कोर्स के अंदर लिमिट वाले utility functions है ही नहीं, तो इसलिए discrete goods is only a theory concept. इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ आस्क्ड वेरी रेयरली, बहुत कम आता है. आपके इंटरनल्स में ज़रूर आएगा, लेकिन एक्सटर्नल्स में विच इज़ योर ड्यू एग्जामिनेशन इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट, और एनी अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर इट इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. चाहे आप MA एंट्रेंस के लिए चले जाओ या किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें, इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. इट इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर इंटरनल एग्जामिनेशन एंड इट्स ओनली अ थ्योरी कॉन्सेप्ट. इसमें से न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं क्योंकि लिमिट वाले यूटिलिटी फंक्शंस आपके कोर्स के अंदर नहीं हैं. सो इफ यू रिमेंबर, डिस्क्रीट गुड्स हम लोगों ने पहले डिफाइन किए थे. वी हैड सेड दैट डिस्क्रीट गुड्स आर ओनली दोज गुड्स व्हिच हैव एन IC एग्जिस्टिंग ओनली ऑन द होल नंबर्स. सो जीरो तो यहाँ पे आएगा नहीं, जीरो तो यहाँ पे. सो आई हैव 1 2 3 4, then my utility function is going to exist at 0, then at 1, then at 2, then at 3, then at 4, and that is then connected by straight lines. Why straight lines? Because they're just connectors in the middle, na? So that is just being connected by straight lines, right? और बाकी जो कॉन्सेप्ट है डिस्क्रीट गुड्स का वो सेम ही है. आई हैव डिमिनिशिंग MRS. डिमिनिशिंग MRS से मतलब है कि जैसे जैसे हम लोग x1 का क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, जो हम x2 गिव अप करते हैं उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है, right? So as we go on moving and increasing more and more of good 1, for each subsequent unit of good 1, the amount of good 2 that I want to give up goes on reducing, goes on diminishing. है ना, ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले किया ही था, राइट? लेट्स लुक एट दिस. सो इन दिस डायग्राम इफ यू कैन सी, AB is my budget line and this is number of units is 1. So my budget line has been drawn in a manner that it is overlapping the IC from 0 to 1. My budget line has been drawn in a manner that it is overlapping the IC between 0 and 1. And this is a possibility क्योंकि AB जो है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है जो मेरी बजट लाइन है, और बिटवीन 0 and 1 जो मेरा IC है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है. IC मेरा स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि between 0 and 1 I am just connecting, they are just the connectors and connectors are always a straight line. And AB में straight line क्यों है? क्योंकि मेरा price ratio constant है. Then that means that on this price ratio I am indifferent. On this price ratio I am indifferent between consuming 0 units or 1 unit of good 1. Similarly, if my price of good 1 falls, my budget line becomes a little more flatter, then I become indifferent between 1 unit and 2 units of good 1. I become indifferent between 1 unit and 2 units of good 1. When I become indifferent between 1 unit and 2 units of good 1, then I can buy any of them, I can buy either of them. Suppose my P1 further falls, which means that my budget line becomes even flatter. Now I'm indifferent between 2 units and 3 units of good 1. So the point is कि आपकी जो budget line है वो या तो ऐसी होगी in which it is actually just at the kink, in which you will buy only the first unit and you're not indifferent. Otherwise mostly क्या होता है, जब मेरा price of good 1 change होता जाता है, then at different prices I might be indifferent 0 and 1, then I might be indifferent between 1 and 2, then I might be indifferent between 2 and 3, and so on and so forth. So the equilibrium is not or may not be unique. The equilibrium may be in such a manner that it is giving me an option between two numbers, that is 0 and 1, 1 and 2, 2 and 3, in which I can buy either. या तो मैं 2 खरीदूँ या 3 खरीदूँ, I am indifferent. I am indifferent. Why does discrete goods work like that? Because discrete goods में हम छोटी छोटी क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, या तो हम उसका होल नंबर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर हम उसका बिल्कुल कुछ ना कंज्यूम करें. This
कॉन्सेप्ट विल बिकम अ लिटिल मोर क्लियरर जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे डिमांड की, और उसके अंदर हम रिजर्वेशन प्राइसेस का कॉन्सेप्ट करेंगे. बट टिल देन आई थिंक इतना समझना बहुत है. 3 चीजें. पहली बात, discrete goods is the ICs existing only at whole numbers. Between the whole numbers the ICs don't exist. डिस्क्रीट गुड्स वो गुड्स होते हैं जहाँ पे आईसीज हमारे होल नंबर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, बीच में नहीं होते हैं. सेकेंड थिंग इज, क्योंकि हमारे पास जो कनेक्टर्स होते हैं वो भी स्ट्रेट लाइन होता है और बजट लाइन भी स्ट्रेट लाइन होता है. दैट इज वाई द बजट लाइन मे बी ओवरलैपिंग द आईसीज. बजट लाइन जो है वो आईसी को ओवरलैप कर रहे होंगे इस मैनर में कि हम लोग इनडिफरेंट हो जाते हैं बिटवीन कंज्यूमिंग 0 यूनिट्स एंड 1 यूनिट, 1 and 2 यूनिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसलिए कंज्यूमर के पास हमेशा चॉइस होती है कि वो कौन सा वाला ले, या तो वो 1 ले या 2 ले, 2 ले या 3 ले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. All right, so I hope discrete goods made sense. I know it was a smaller video, but I didn't want to give you something जो कि आपके एग्जाम्स में नहीं है. यूटिलिटी फंक्शन जो है discrete goods का वो आपके कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लिमिट वाले यूटिलिटी फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है. All right, सो लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर डिस्क्रीट गुड्स. हो सकता है उसमें आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी जो मिसिंग है वो आ जाए. अदरवाइज आप ये वीडियो 1-2 बारी और करोगे तो आपको जो थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिसिंग लग रही है वो आ जाएगी. इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक. ऑलराइट, थैंक यू.